फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एट द रेट पर्सनल टैक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्स ऑडिट के चेंजेस जो कि एप्लीकेबल है फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 एंड फर्दर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेंजेस जानने के लिए, क्योंकि 30 सितंबर टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है। तो उससे पहले हम ये चीज चेक कर लें कि जो चेंजेस हैं उनको हमने प्रॉपरली अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, अपनी आईटीआर में इनकॉर्पोरेट कर लिया है नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई टैक्स ऑडिट होता क्या है। तो टैक्स ऑडिट है स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर स्पेसिफाइड टैक्स पेयर्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. It ensures correct income declaration, compliance, and generates audit report. It applies to businesses, professionals, and certain presumptive cases. Key thresholds क्या है? बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ का जनरल रूल है। एक्सेप्शन है अगर टर्नओवर 10 करोड़ तक है और 95% डिजिटल रिसीट्स और पेमेंट्स हैं, ऑडिट में भी अवॉइडेड। प्रोफेशनल्स के लिए क्रॉस रिसीट्स की थ्रेशहोल्ड है 50 लाख रुपीज। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यूजर्स के लिए सेक्शन 44 एडी में डिफरेंट लिमिट है 2 करोड़ की। फॉर्म 3CD में मेजर रिपोर्टिंग चेंजेस क्या हुए हैं? तो 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। न्यू रिपोर्टिंग फॉर पेमेंट टू एमएसएमई क्लॉज 22-26 में अपडेट हुआ है। न्यू क्लॉज फॉर कंसीडरेशन फ्रॉम बाईबैक ऑफ शेयर क्लॉज 36B में चेंज आया है। रिपोर्टिंग ऑफ लीगल सेटलमेंट एक्सपेंडिचर टू सेटल प्रोसीडिंग्स क्लॉज 37। एक्सपेंडेड डिस्क्लोजर ऑफ लोन्स, डिपॉजिट्स एंड स्पेसिफाइड एडवांसेस क्लॉज 31 and reporting of presumptive income under new provisions clause 12 and 44 BBC. तो क्लॉज 22 और क्लॉज 26 एमएसएमई के चेंजेस सबसे पहले समझते हैं। तो डिटेल्ड रिपोर्टिंग ऑफ पेमेंट्स मेड टू एमएसएमई हैज नाउ बिकम मैंडेटरी इन फॉर्म 3CD. Now you need to provide not only details of interest on delayed payment but also the total amount payable to the MSME must be disclosed. A breakdown of how much payment was made on time and how much payment was delayed must also be provided. This change is in accordance with Section 23 of the MSME Development Act, which does not allow interest on delayed payments. Clause 26. If any of your expenses were disallowed under Section 43BH due to MSME payment delays in previous financial year, then a breakdown of that disallowed amount must also be provided, describing how much was paid in the current year and how much is still pending. Clause 31. Detailed reporting of loans, deposits, and advances. Now in clause 31, you will need to report in a coded format related to loans, deposits, specified advances. तो सीबीटीटी ने कोड असाइन किए हैं A to L, जैसे कि A है कैश रिसीट का, B है नॉन अकाउंट पे इंस्ट्रूमेंट्स का, जर्नल एंट्री का, C है, D है डेबिट क्रेडिट ट्रांसफर एंड सो ऑन। पहले क्या होता था? प्रीवियसली सच ट्रांजैक्शंस वर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली, स्पेशली बुक एंट्रीज. नाउ ईच mode will need to be identified and reported. Clause 36B. Reporting of buyback of shares. Following the Finance Act 2025, buyback of shares is now treated as dividend. For this reason, a new clause has been added to Form 3CD. If a company has repurchased your shares, you will need to report buyback amount received, how much money was received, cost of acquisition. These details needs to be reported. Clause 37. Law violation settlement expenses. तो सेक्शन 37 बिजनेस एक्सपेंसेस के अलाउंसेस की बात करता है। नो लॉन्गर अलाउ सेटलमेंट एक्सपेंसेस फॉर वायलेशन ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक लॉज. Say if you have violated any regulatory law such as SEBI Act, Competition Act, SCRA, and paid a settlement amount, paid lawyer, professional fees, or incurred any other related expenditure, this will now require separate reporting under clause 37 and this expense will be disallowed. ये चेंज इफेक्टिव है फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। प्रिजम्पटिव इनकम का चेंज 44 बीबीसी में। तो क्लॉज 12, अ न्यू सेक्शन 44 बीबीसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर नॉन रेसिडेंट्स हु ऑपरेट क्रूज शिप इन इंडिया. Clause 12 now also requires mention of presumptive income under Section 44 BBC. This change is primarily relevant to the shipping and cruise line operators who operates in India. तो ये चेंजेस की समरी है। क्लॉज 22 और 26 में क्या चेंज आया है? डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ एमएसएमई पेमेंट, डिले एंड 43BH रिपोर्टिंग. Clause 36B, buyback of shares, buyback receipt plus cost of shares to be reported.
Clause 37, settlement expenses. Expenses for regulatory violation disallowed and to be reported. Clause 31, loans, deposits, journal entry and mode-wise coded reporting. Clause 12, Section 44 BPC, mention of presumptive income of cruise operators. डेडलाइन क्या है? तो इस समय के हिसाब से टाइमलाइन है 30 सितंबर 2025 फॉर ट्रांसफर केस फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2025. ITR filing for audit cases generally by 31 October 2025. Industry bodies have requested extension citing portal glitches, monitor CBDT announcements. Penalty and consequence क्या है? Late audit reporting and attract penalties under section 271B and affect tax positions. Inaccurate disclosures in Form 3CD may invite reassessment and interest penalties. Maintain supporting documents, bank statements, payment gateway, reconciliation and MSME confirmations. Practical pre-audit checklist क्या है? Reconcile turnover with bank, UPI, payment gateway reports. Show percentage digital receipts. Collect MSME invoices and proof of timely payment. Document buyback receipts, legal settlement agreement and loan confirmation. प्रिपेयर क्लॉज वाइज बैकअप फॉर फॉर्म 3CD. तो सारे क्लॉज को हमने क्लॉज बाय क्लॉज एनालिसिस किया है अपने चैनल पर 11 वीडियोस में. आपको वो वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल @personal tax फॉर detailed videos on personal tax and personal finance. Please like, share and comment your questions for our next deep dive session. Thank you very much.